opportunity to understand. किंतु यदि आप शरणागत नहीं हैं तो ये मौका आपको दिया जाएगा जब आपको समझना पड़ेगा. So for Nitai, he came in for which time? Third time. तो ये निताई प्रभु तीसरी बार अंदर आते हैं. You get 3 chances. आपको 3 बार मौका दिया जाएगा. He came in for the third time and he went like that. तो ये तीसरी बार अंदर आते हैं, सिर ठोक के उठ के खड़े हो जाते हैं. He popped his head down on the floor and he sat right up. उन्होंने जाके सिर ठोका और वे सीधे खड़े हो गए. He didn't offer obeisances. उन्होंने प्रणाम नहीं किया. And he sat up. जैसे ही उठ के खड़े हुए. I'm still rubbing Prabhupada's back because he didn't tell me to move. मैं अभी भी पेट की मालिश कर रहा था क्योंकि प्रभुपाद ने मुझसे रुकने के लिए नहीं कहा था. Every evening I massage Srila Prabhupada in his bedroom. रोज शाम को श्रील प्रभुपाद के कक्ष में मैं उनकी मालिश किया करता था. For me, that was the most ecstatic period of the day. मेरे लिए दिन का सबसे अधिक रोमांचकारी क्षण हुआ करता था. It was just him and you. No one ever entered Prabhupada's bedroom. सिर्फ वे और मैं, कोई भी श्रील प्रभुपाद के कमरे में घुसने की हिमाकत नहीं कर सकता था. No lights would be on. Whatever was coming in from outside window or from a different room, that's all you would see. And Prabhupada's just lying peacefully in the bed. कोई कृत्रिम रोशनी का बंदोबस्त नहीं था, केवल बाहर से आने वाली रोशनी थी और आप श्रील प्रभुपाद को बिस्तर में लेटे हुए देख सकते थे. Sometimes it's 10:30, 11 o'clock at night, and I'm massaging his legs, massaging his feet. कभी रात को 10:30, 11 बज रहे होते थे और मैं श्रील प्रभुपाद के पैरों की मालिश कर रहा था. And I'd be tired. और मैं भी थक जाता था. Getting up 4 o'clock in the morning. सवेरे 4 बजे उठना होता था. And I'd be looking at Prabhupada and I'm thinking, Prabhupada's sleeping. और मैं श्रील प्रभुपाद की ओर देख के सोचता था प्रभुपाद तो सो रहे हैं. But I knew I couldn't leave. You just keep massaging. किंतु मुझे पता था मैं छोड़ के नहीं जा सकता, मसाज करते रहना होगा. Well, sometimes I'd start squeezing harder. कभी-कभी मैं जोर से दबाया करता था. He liked that. प्रभुपाद को ये बहुत पसंद आता था. He liked good firm massage. Huh? श्रील प्रभुपाद को जोर की मालिश बड़ी पसंद थी. But just keep going. And finally he'd say, go take rest. और अंत में श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जाओ जाके आराम करो. So when Nitai did that, boom, boom. तो जब निताई प्रभु ने बूम बूम किया, Prabhupada said, you offer obeisances to the spiritual master. प्रभुपाद ने कहा तुम गुरुदेव को प्रणाम करोगे. And then he added, don't do the hatchet. और प्रभुपाद ने कहा ये उस तरह की तरह मत चलो. You all know what hatchet is, huh? आप उस तरह जानते हैं. Such an amazing word Prabhupada used, because he was destroying his own spiritual life. उस तरह जो अपने खुद के आध्यात्मिक जीवन को समाप्त कर रहा हो. Because it shows, like we said again, one piece of rice, you know what's going on in the whole pot. क्योंकि इससे प्रतीत होता है चावल के एक दाने से चावल की हांडी में क्या पक रहा है इसके बारे में मालूम पड़ जाता है. If you don't have proper respect for your spiritual master, आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धालु नहीं हैं. In Mumbai, Juhu, मुंबई जुहू की घटना है. when Prabhupada was staying in his flat before there was any construction going श्रील on, प्रभुपाद अपने फ्लैट में रहा करते थे. उस समय मुंबई मंदिर का निर्माण चल रहा था. he was staying on the second floor, top flat. श्रील प्रभुपाद दूसरे तल पे रहा करते थे. Prabhupada was so regulated, every morning coming down for sunrise, morning walk. श्रील प्रभुपाद रोज सवेरे की सैर के लिए नीचे उतर के आया करते थे. So this morning, and there's maybe 10, 15 devotees living there somewhere in Juhu. और उस समय 10-15 भक्त जुहू में कहीं तो भी रहा करते थे. And another dozen devotees from around. They would all go on the morning walk. और करीब 1 दर्जन भक्त साथ में आके श्रील प्रभुपाद के साथ सवेरे की सैर पे निकला करते थे. When Prabhupada came down the stairs, श्रील प्रभुपाद सीढ़ियों से उतरते थे. there was a nice garden our God brother Kanva had created there in Juhu. Very pretty. तो हमारे गुरु भाई कण्व ने वहाँ पे जुहू मंदिर में बहुत सुंदर बगीचे की रचना की थी. So Prabhupada walked out of the flat, walked into the garden area. Of course, everyone offered obeisances. श्रील प्रभुपाद फ्लैट से उतर के बगीचे में आते थे और हर कोई उन्हें प्रणाम करता था. Some were offering dandavats. कोई दंडवत प्रणाम करता था. But there was one devotee boy. He किंतु stood there like this.
एक भक्त था जो हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, just looking at Prabhupada, didn't offer, continued to stand with his hands folded very reverentially. अपने हाथों को बड़े ही सम्मान के दृष्टिकोण से हाथ में जोड़ के श्रील प्रभुपाद की ओर निहारता रहता था। And I'm walking next to Prabhupada and I'm holding the microphone as I did every day. और मैं श्रील प्रभुपाद के बाजू में चल रहा था और माइक्रोफोन पकड़ रहा था रोज की तरह। And we're walking. Prabhupada looked at me. और हम चल रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा He said, that's the beginning of his fall down. और प्रभुपाद ने कहा ये उसके पतन की शुरुआत है। Krishna consciousness is a very serious business. कृष्ण भावनामृत यानी कि बहुत गंभीर कार्य। And if we think we're struggling, we should understand we have to become serious. और यदि हम संघर्ष कर रहे हों तो हमें समझना चाहिए कि हमें और अधिक गंभीर बनना होगा। I'm still trying to become serious. मैं अभी भी गंभीर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। I started to say this morning, and this morning I cut myself short. We were all told 10 minutes or so to speak, so I tried to do that. तो आज सवेरे हम सभी को 10 मिनट का समय आवंटित किया गया था, तो मैंने उतना ही बोलने का प्रयास किया। I was saying, it was literally 50 years ago, maybe 1 week before, that I became Prabhupada's servant in New Vrindavan. तो ये 50 साल पहले की बात थी, ऐसा लगता है 1 सप्ताह पहले की बात हो, नव वृंदावन में मैं श्रील प्रभुपाद का सेवक बन गया था। This Kartik, 50 years ago, that Srila Prabhupada came to Vrindavan, Radha Damodar temple. इस कार्तिक में 50 साल पूरे होंगे जब श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में आए थे। For Kartik, कार्तिक के महीने में 1972. 1972 साल में He arrived in Vrindavan the very first day of Kartik. कार्तिक के पहले दिन वे वृंदावन धाम में आए थे। And he had planned this. He told me about it from 6 weeks before when I became his servant, how excited he was. और श्रील प्रभुपाद ने मेरे सेवक बनने के 6 सप्ताह पहले ही मुझे बताया था वे कितने अधिक उत्साहित थे। So yes, this year in Vrindavan, we're going to try to celebrate that. Prabhupada's 50th anniversary. It was the first time he celebrated Kartik in Vrindavan from when he left 1965. So 7 years had gone by. 1965 में अमेरिका जाने के पश्चात 7 वर्षों के पश्चात श्रील प्रभुपाद कार्तिक मास की पहली तिथि पे वहाँ पे आ रहे थे, तो हम इस तिथि को मनाने वाले हैं। So that's my own little personal anniversary that I'm very excited about this year. तो ये मेरी वर्षगांठ है और मैं इस साल इसको लेकर बहुत अधिक उत्साहित हूँ। When I first became Prabhupada's servant, was in New Vrindavan. जब मैं श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बना, ये नव वृंदावन की घटना है। So that was around sometime in August. तो ये अगस्त के महीने के आसपास की घटना है। So Prabhupada went from New Vrindavan to Pittsburgh. श्रील प्रभुपाद नव वृंदावन से पिट्सबर्ग गए। Then he went to Dallas, Texas, where the first Gurukula was. इसके बाद वे डैलस टेक्सास गए जहाँ पे सबसे पहले गुरुकुल की स्थापना की गई थी। There he spent 3 days showing me how to use the cooker. वहाँ पे उन्होंने 3 दिन बिताए ये सिखाने के लिए कि कुकर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। Maybe we'll talk about that another day. हम कभी और इसके बारे में बात करेंगे। Then he went to Los Angeles for a few weeks, तत्पश्चात वे कुछ सप्ताहों के लिए लॉस एंजलिस गए। the world headquarters at that time. उस समय इस्कॉन का विश्व मुख्यालय। Then he stopped in Hawaii. इसके बाद वे हवाई में रुके। Then he went to Manila, Philippines. इसके बाद वे मनीला फिलीपींस गए। And what's that other place called? Anyway, where he went, जिस स्थान पे वे गए, trying to think, Thailand. What's the capital of Thailand? एंगकोर वॉट। Yes. So there was no temple there. He stayed there for a week in a hotel room. थाईलैंड में 1 सप्ताह एक होटल के कमरे में रुके। उन दिनों वहाँ कोई मंदिर नहीं था। Prabhupada despised hotels. Didn't like, hated. श्रील प्रभुपाद को Hotel. होटल एकदम पसंद नहीं थे। Disgusting places. बकवास जगह है। He would rather stay in his unfinished rooms at a temple than stay in some hotel room.
श्रील प्रभुपाद अपने आधे अधूरे मंदिर के कमरों में रहना पसंद करते थे बजाय कि किसी होटल के कमरे में रहने के। And he did it very often. He would stay in his unfinished rooms. और श्रील प्रभुपाद अक्सर ऐसा किया करते थे, ये अपने अधूरे कमरों में ही रहना पसंद किया करते थे। But now he's in a hotel. There was no choice. किंतु अब उन्हें होटल के कमरे में रुकना पड़ा, कोई विकल्प नहीं था। So even cooking for him was difficult. तो ऐसी परिस्थितियों में श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई करना भी बहुत कठिन था। At this time he was traveling, of course myself, Shyama Sundar, तो उस समय वे भ्रमण कर रहे थे, मैं और श्याम सुंदर प्रभु साथ में थे, and he had 3 other sannyasis traveling with him. और उनके साथ 3 और सन्यासी भी भ्रमण कर रहे थे। Siddhaswarup Ananda Goswami, सिद्ध स्वरूपानंद गोस्वामी, Tushta Krishna तुष्ट Maharaj, कृष्ण महाराज, and one other Swami, I always forget his name, और एक और स्वामी जिनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। 1972. 1972 की घटना। He had tattoos all over him. इन्होंने अपने पूरे शरीर को गुदवा रखा था, He was a scary looking man. और ये देखने में बड़े ही भयानक थे। Prabhupada had them traveling with him so that they could understand how to teach properly Krishna consciousness. श्रील प्रभुपाद उन्हें अपने साथ लेकर भ्रमण कर रहे थे ताकि वे उन्हें शिक्षा दे सकें किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जाए। Because Siddhaswarup, he had hundreds of followers of his own. क्योंकि सिद्ध स्वरूपानंद के अपने खुद के हजारों अनुयायी हुआ करते थे, But he didn't understand Prabhupada's mood. किंतु उन्हें श्रील प्रभुपाद का मनोभाव बिल्कुल समझ में नहीं आया। So Prabhupada said, travel with me. They stayed with him for a few months. श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरे साथ भ्रमण करो, तो ये वास्तव में श्रील प्रभुपाद के साथ कुछ महीनों तक रुके थे। So they were there. तो ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। Now it's evening time. अब शाम का समय हो चुका है। Every evening Prabhupada had a drink. रोज शाम को श्रील प्रभुपाद कुछ पिया करते थे। What did he drink? वे किस चीज का सेवन करते थे? Everyone. Hot milk. क्या पीते थे? गरम गरम दूध। Garam dood. Not just hot, boiling hot. सिर्फ गरम नहीं, उबलता हुआ दूध। As hot as you could, foaming 3 times. We also learned that 3 times. That's how we would boil the milk. हमने सीखा था दूध को 3 बार उबालना पड़ता था। Sometimes, if I wasn't bringing it to him, someone else would bring it. कभी कभी मैं नहीं लाता था तो कोई और लाया करता था। One time, devotee was walking in holding the cup of milk. तो एक बार एक भक्त उस मिल्क के गिलास को पकड़ के अंदर आ रहे थे। Prabhupada said, it's not hot. प्रभुपाद ने कहा गरम नहीं है। Devotee said, yes it is, Prabhupada. भक्त ने कहा प्रभुपाद He बहुत said, गरम I है। just did it. मैंने अभी गरम किया He है। said, it's not hot. प्रभुपाद ने कहा गरम नहीं है। He said, you're holding the cup. प्रभुपाद ने कहा तुमने कब पकड़ रखा है। You had to know what to do every moment. आपको पता होना चाहिए था हर क्षण में क्या करना है। Attentive. सावधानी। That's the one word, to be servant, spiritual master. गुरुदेव का सेवक होने में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। Just like pujari, same thing. Servant ठीक पुजारों means की pujari. सेवा यानी पुजारियों की तरह करना। The only difference was Prabhupada moved around all the time. अंतर ये था श्रील प्रभुपाद सब समय यहाँ वहाँ भ्रमण करते थे। As far as I know, the deities, for the most part, they just stay in place. किंतु विग्रहों की बात करें तो ये एक स्थान पर ही स्थित रहते हैं। Once brahmachari said to Prabhupada, Prabhupada, I just want to stay at your lotus feet. एक बार एक ब्रह्मचारी ने श्रील प्रभुपाद से कहा प्रभुपाद मैं केवल आपके चरण कमलों में रहना चाहता हूँ। Prabhupada laughed. प्रभुपाद हंसे। He said, that will be very difficult. I'm always moving. प्रभुपाद ने कहा बहुत कठिन होगा क्योंकि मैं तो हम सब समय चलता रहता हूँ। So that night, me, 20-year-old boy from the USA, तो उस रात को मैं 20 साल का एक नौजवान लड़का उत्तरी अमेरिका से, I was rather shy, मैं बहुत शर्मीला था। never liked confrontation. मुझे कभी भी लड़ाई झगड़े पसंद नहीं थे। To this day, इस दिन तक I'll do anything to avoid an argument. मैं बहस से बचने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। You can't be a good manager if you don't like to argue. अगर आपको बहस करना पसंद नहीं तो आप प्रबंधक नहीं हो सकते। Easy going.
इजी गोइंग। That's what they say. The path to hell is very easy. तो ये कहते हैं कि नरक जाने का रास्ता बड़ा सुगम है, बहुत आसान है। Prabhupada just said to me, his new servant, 2-3 weeks, I want my milk. श्रील प्रभुपाद ने मुझे कहा, मैं नया सेवक था, 2-3 सप्ताह हुए थे, बोले जाओ मेरे लिए दूध लाओ। I had no idea what to do. मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। So I got the milk was there. तो मैं गया, वहाँ पे दूध रखा हुआ था। I go down into the basement of this hotel where the kitchen is. मैं होटल के बेसमेंट में गया, भूतल में गया, जहाँ पे किचन था, रसोई घर था। 1972. 1972। Shaved head, dhoti, tilak, saffron cloth. घुटा हुआ सिर, धोती, तिलक, गेरुए वस्त्र। And I find my way to the kitchen. और मैं रसोई घर के रास्ते जा रहा हूँ। The hotel kitchen. Big, होटल का किचन। with my little cup of milk. और मेरे हाथ में दूध का छोटा सा गिलास था। And of course, neither do I speak the language. और मुझे वहाँ की स्थानीय भाषा भी नहीं आती थी। And I said, I need to heat this milk. और मैंने कहा मुझे इस दूध को गर्म करना है। And they're just looking at me like, go away. And I'm like, I have to heat this milk for my guru. और मैं उनकी तरफ देख के कह रहा था मुझे अपने गुरुदेव के लिए दूध गर्म करना है, और वे कह रहे थे निकल जाओ यहाँ से। So after a few feeble attempts, maybe 3, I go back upstairs. तो मैंने 2-3 बार प्रयास किया और उसके बाद में ऊपर चला गया। And Prabhupada looks at me. और प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा। He said, where's my milk? कहते मेरा दूध कहाँ है? I said, Prabhupada, they won't let me into the kitchen. श्रील प्रभुपाद वो तो मुझे रसोई घर में घुसने ही नहीं दे रहे। Prabhupada just looks at me. प्रभुपाद ने सिर्फ मेरी ओर देखा। And this Maharaj, और ये जो महाराज, why can't I think of his name? उनका नाम क्या है? He grabs the cup from me. He said, I'll get your milk, Prabhupada. उन्होंने मेरे हाथ से दूध का गिलास छीना और बोला श्रील प्रभुपाद मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ। 5 minutes later, he comes back with the hot boiling milk. 5 मिनटों के अंदर वे गरम उबलता हुआ दूध लाते हैं। And he said, brings it to Prabhupada. और वे प्रभुपाद के पास से लेकर आते हैं। He said, Prabhupada, sometimes you have to yell. श्रील प्रभुपाद वे कहते हैं कभी कभी आपको चिल्लाना होता है। Prabhupada smiled. प्रभुपाद मुस्कुराते हैं। And then he looked over to me. और तब वे मेरी ओर देखते हैं। He said, Shruta Kirti is not serious. श्रुत कीर्ति गंभीर नहीं है। I'll never forget that. मुझे ये बात कभी भी नहीं भूलेगी। Krishna consciousness is serious. कृष्ण भावनामृत यानी बहुत गंभीर है। We knew, we all grew up, Ujjain and I know. You can't have one foot in the material world and one foot in the spiritual world. Not possible. उदय और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। आपका एक पैर आध्यात्मिक जगत में और एक पैर जड़ जगत में नहीं हो सकता। The beginning of your fall down. ये आपके पतन की शुरुआत है। So many beginnings. इतनी सारी शुरुआतें देखी हैं। So, तो I learned a lesson at that time. मैंने उस समय एक सबक सीखा। And I saw 2.5 years later और 2.5 साल बाद मैंने देखा that attentiveness, it can drift away. वो सावधानी वो यहाँ वहाँ चली जा सकती है। We become comfortable. तब हम बड़े सुखदायी हो जाते हैं। Another thing, Krishna consciousness and your comfort, they don't go together. कृष्ण भावनामृत और आराम एक साथ नहीं चलते। Just like you're having this festival now, 3 days, 4 days. जैसे कि ये महोत्सव का आयोजन किया गया है, 3-4 दिनों तक चलेगा। When you were with Prabhupada, every day was a festival. जब आप श्रील प्रभुपाद के साथ होते थे, हर दिन एक महोत्सव हुआ करता था। Every kirtan in the temple room was Janmashtami. मंदिर में होने वाला हर कीर्तन एकदम जन्माष्टमी के सदृश था। We all just long for that same time. हम केवल उस समय की अपेक्षा करते हैं। I saw Udayananda this morning chanting at the kirtan. This is Krishna consciousness. मैं सवेरे देख रहा था उदयानंद सवेरे कीर्तन कर रहे थे। ये कृष्ण भावनामृत है। We have to take it very seriously. हमें इसे बड़े गंभीरता से स्वीकारना होगा। My only good fortune is Prabhupada's compassion. मेरे सौभाग्य का एक ही कारण है श्रील प्रभुपाद की कृपा। When you're with him personally, he sees you do little service. He's very, very merciful. जब आप उनके साथ होते हैं और आपको छोटी मोटी सेवाएं करते देखते हैं तो ये बड़ी कृपा करते हैं।
I said, imagine 2.5 years, Prabhupada raised his voice, yelled at me maybe 4 times. श्रील प्रभुपाद 2.5 साल में उनके साथ था, मेरे ऊपर केवल 4 बार चिल्लाए. Not because I was qualified and knew what I was doing, because I was with him 24 hours a day. इसलिए नहीं कि मैं बड़ा योग्य था और मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, किंतु इसलिए कि मैं 24 घंटे उनके साथ रहा करता था. I would see some of these managers, Prabhupada be yelling at them 4 times in one day. और इनमें से कुछ प्रबंधक श्रील प्रभुपाद दिन में 4 बार उनके ऊपर चिल्लाया करते थे. So many times. कितनी बार. But with me, he was very gentle. किंतु मेरे ऊपर श्रील प्रभुपाद बड़े नरम थे. Because he understood each and every one of us, how much he could bend. क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे हम में से सभी को वे हमें कितना मोड़ सकते थे. We have about 10 minutes left. Anyone has, I can go on and on. I could go on till midnight, but anyone has any questions or comments तो at मैं this आधी रात तक point? बोल सकता हूँ, बोलता ही जा सकता हूँ. किसी को कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी करनी हो. None? 9. No, we can't do that. But, and I'll tell you how, imagine, I'm in the kitchen in New Vrindavan, 8 o'clock at night. कल्पना कीजिए मैं नव वृंदावन के रसोई घर में हूँ, रात के 8 बज रहे हैं. I'm making milk sweets for Radha Vrindavan Chandra. मैं राधा वृंदावन चंद्र के लिए दूध की मिठाइयाँ बना रहा हूँ. Kirtanananda Swami came into the room. कीर्तनानंद स्वामी कमरे में आते हैं. 10 hours before Prabhupada was leaving New Vrindavan. श्रील प्रभुपाद के वृंदावन छोड़ के जाने के 10 घंटे पहले की घटना. And he came up to me and said, do you want to be Prabhupada's servant? वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम श्रील प्रभुपाद के सेवक होना चाहोगे? Yes. मैंने कहा हाँ. Who wouldn't say yes? कौन हाँ नहीं बोलेगा? He said, okay, you'll leave with him tomorrow morning. उन्होंने कहा ठीक है, तुम कल सवेरे उनके साथ जाओगे. The next morning, 5 o'clock in the morning, he brings me into Prabhupada's room. He had a little farmhouse, Madhuban अगले दिन colony. सवेरे 5 बजे वे मुझे श्रील प्रभुपाद के कक्ष में ले गए, मधुबन में एक खेत के बीच में. And again, it's dark in the room except for Prabhupada's desk lamp. और पूरे कमरे में अंधकार था, केवल श्रील प्रभुपाद का डेस्क लैम्प जल रहा था. And we went in together, we offer obeisances. हम एक साथ अंदर प्रविष्ट हुए, हमने प्रणाम किया. Kirtanananda Swami and myself. कीर्तनानंद महाराज और मैं. And we sit up and Kirtanananda says, Prabhupada, this is Shruta Kirti. और हम उठ के खड़े हुए, तब कीर्तनानंद ने कहा प्रभुपाद ये हैं श्रुत कीर्ति, He's going to be your servant. ये आपके सेवक बनेंगे. Prabhupada didn't pick his servant. प्रभुपाद अपने सेवक खुद नहीं चुनते थे. Prabhupada didn't ask Krishna, I need a servant. श्रील प्रभुपाद ये नहीं कहते थे कृष्ण से कि मुझे एक सेवक की जरूरत है. He just did his service. श्रील प्रभुपाद केवल अपनी सेवा किया करते थे. Whatever Krishna arranged, that was okay. श्रील कृष्ण जिस भी चीज की व्यवस्था करे प्रभुपाद उससे संतुष्ट रहते थे. And then Kirtanananda said, he's a very good cook, but he doesn't know how to massage. तब कीर्तनानंद ने कहा ये बहुत अच्छा रसोइया है किंतु इसे मालिश करना नहीं आता. Prabhupada said, anyone can massage. प्रभुपाद ने कहा कोई भी मालिश कर सकता है. That wasn't true. ये बात सत्य नहीं थी. He was very particular about everything. श्रील प्रभुपाद हर चीज के बारे में बहुत ही. If you sweat, you couldn't massage Prabhupada. अगर आपको पसीना आ रहा हो तो आप प्रभुपाद की मालिश नहीं कर सकते. If you had calluses on your hand, you couldn't massage Prabhupada. अगर आपके हाथ बड़े खुरदुरे हों तो आप प्रभुपाद की मालिश नहीं कर सकते. And no offense intended, but he said, Tamal Krishna massage like a woman. और अपराध मत लीजिएगा, लेकिन उन्होंने कहा था तमाल कृष्ण एकदम स्त्रियों की तरह मालिश करता है. So that also wasn't proper. तो ये भी ठीक नहीं था. And Prabhupada's sitting behind his desk. और श्रील प्रभुपाद मेज के पीछे बैठे थे. And he reached under his desk. और ये मेज के तरफ इन्हें हाथ बढ़ाया. And he grabbed a very famous lota. और उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध लोटा उठाया.
That's another story we don't have time for ये tonight. एक और कहानी आज सारा रात की उसके लिए समय नहीं He है। grabbed the lota उन्होंने लोटा उठाया and he got up और उठ के खड़े हुए and he said, "Follow me." और उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आओ। That was my very first instruction. तो ये मुझे मिलने वाले सबसे पहले निर्देशों में से एक है। Think about that. इसके बारे में सोचो, Follow me. मेरे पीछे पीछे आओ। That's the only instruction, ये एकमात्र निर्देश है huh, from the spiritual master. You follow what he wants you to do. आप वो कीजिए जो वे आपसे करवाना चाहते हैं। And I followed him out the door. और मैं उनके पीछे पीछे दरवाजे तक गया, Went about 5 meters. 5 मीटर तक गया। He grabbed the lota. He said, उन्होंने "Wait here." I waited. उन्होंने मेरे हाथ से लोटा लिया और कहा यहीं पे रुको। मैं वहीं रुक गया। He went into the trees. श्रील प्रभुपाद वृक्ष के पीछे चले गए। After a few minutes, he came back. कुछ मिनटों बाद वापस आते हैं। He handed me the lota. मुझे लोटा पकड़ाया। He said, "You wash this with the dirt and water." उन्होंने कहा मिट्टी और पानी से इसको धो। So that was my very first service, was cleaning Prabhupada's lota. तो ये थी मेरी पहली सेवा, श्रील प्रभुपाद के लोटे को साफ करना। He's showing me, this is your business. श्रील प्रभुपाद मुझे दिखा रहे थे ये है तुम्हारा काम। Not just this lifetime, every lifetime, that's all you are. सिर्फ ये जीवन नहीं, हर जीवन में तुम्हारी यही If you स्थिति think है। you're more than that, you're already gone. It's just a question of time. अगर तुम्हें लगता है तुम इससे बढ़ चढ़ के कुछ हो तो तुम जा चुके हो, केवल समय की अपेक्षा करो। I never had to wash that lota again. मैं दूसरी बार उस लोटे को साफ करने का अवसर मुझे नहीं मिला। Every place we went, there was a half a dozen Matajis cleaning Prabhupada's room, polishing the brass, polishing the silver, polishing his cooker. जहाँ पे भी हम जाते थे कम से कम आधा दर्जन माता जी रहती थी, हर चीज को बड़े करीने से साफ किया करती थी। And I was on the morning walk holding the microphone. और मैं सवेरे की सैर पे माइक्रोफोन पकड़ के चलता था। But I could understand that instruction and what it meant. किंतु मुझे समझ में आ चुका था कि श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। The secretary told me, "You're going to be Prabhupada's servant." सचिव ने मुझे बताया तुम श्रील प्रभुपाद के सेवक होगे। There wasn't a guru servant manual to study. और उन दिनों गुरु शिष्य मैनुअल नहीं था, कोई पुस्तक नहीं थी जिसको पढ़ के हम सेवा कर सकते। No disciple course. गुरु शिष्य कोर्स भी नहीं था। No how to be a guru course. कैसे गुरु बने ये कोर्स भी नहीं था। Japa seminar. None of this existed. जब सेमिनार कुछ नहीं था, इनका अस्तित्व ही नहीं था। We learned as we were doing. हम करते करते सीख रहे थे। So the secretary said to me, सचिव ने मुझसे कहा "When Prabhupada rings the bell, you go in the room. जब प्रभुपाद घंटी बजाएं तुम कमरे में जाना। When Prabhupada's sitting in the car, you sit next to him. जब श्रील प्रभुपाद गाड़ी में बैठे हो तो तुम उनके बाजू में बैठना। When Prabhupada's on the airplane, you sit next to him." जब श्रील प्रभुपाद हवाई जहाज में हो तो तुम उनके बाजू में बैठना। And it's, of course, created a lot of anxiety in me, but at the same time, I'm thinking, what a wonderful service. You're just always next to Prabhupada. और इससे मुझे थोड़ा तनाव भी हो रहा था, किंतु मैं सोच रहा था क्या अद्भुत सेवा है, बस श्रील प्रभुपाद के बाजू में रहो। So my very first day, we arrive in Pittsburgh after a 3-hour drive. तो पहले दिन 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम पिट्सबर्ग पहुंचे। And there at the temple, they had temporary quarters for Prabhupada. They had a bedroom and a sitting room for him. तो वहाँ पे एक अस्थाई मंदिर का निर्माण किया गया था, एक कक्ष था श्रील प्रभुपाद के बैठने के लिए। And I really had no idea what it meant to be with Prabhupada. और मुझे कुछ पता नहीं था प्रभुपाद के साथ रहने का क्या मतलब होता है। So he's in his sitting room, तो श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में थे and I'm sitting in the bedroom. और मैं उनके दूसरे कमरे में था And I'm looking in his suitcase. और मैं उनके सूटकेस को देख रहा था। There wasn't a lot in his suitcase. प्रभुपाद के सूटकेस में कोई लॉक भी नहीं था। Some dhotis, some kurtas, chadar, sweater. कुछ धोती, कुर्ते, चादर, स्वेटर। This funny looking thing, his cooker looked like a bomb. श्रील प्रभुपाद का कुकर जो देखने में एक बम की तरह प्रतीत होता था। If you tried to travel now with that cooker, you'd be stopped every time you went to the airport. They'd be arresting you, wondering what this bomb was in his suitcase.
यदि आज के समय में उस कुकर के साथ आप सैर करने का प्रयास करें तो दुनिया के हर हवाई अड्डे पे आपको रोका जाएगा, पूछा जाएगा ये बम के साथ क्या कर रहे हो भैया। So I'm just sitting there in anxiety. What am I doing? तो मैं वहाँ बड़े तनाव में बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। And I heard a bell ring. और तब मैंने एक घंटी की आवाज सुनी। I knew what to do. मुझे पता था क्या करना है। I got up, I ran into Prabhupada's room, I offered obeisances. मैं उठ के दौड़ा, श्रील प्रभुपाद के कक्ष में प्रविष्ट हुआ और जाके प्रणाम किया। I have no idea what to expect. मुझे पता नहीं था किस बात की उम्मीद करूं। This beautiful little pure devotee sitting behind his desk, ये सुंदर से छोटे से शुद्ध भक्त इस मेज के पीछे बैठे हुए हैं। golden complexion, इनके शरीर का रंग सुनहला है। his effulgence, इनकी तेज, इनकी ज्योति, the tears in his eyes, they look like diamonds glistening. इनकी आंखों से निकलने वाले अश्रु देख के हीरे जैसे प्रतीत होते हैं। And I sat up. और मैं सीधे बैठ गया। Yes, Prabhupada, what can I do? जी प्रभुपाद, मैं क्या कर सकता हूँ? He said, nothing. उन्होंने कहा कुछ नहीं। I just wanted to see how fast you were. मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम कितने तेज हो। I was fast. मैं बहुत तेज था। He smiled. वे मुस्कुराए। And at the first time he rang the bell, he took away all my anxiety with that look. और पहली बार घंटी बजा के उन्होंने मेरे अंदर के सारे तनाव को दूर कर दिया। His very first comment made me relax. उनकी पहली टिप्पणी ने मुझे तनाव मुक्त कर दिया। Expert. Prabhupada was expert. श्रील प्रभुपाद दक्ष थे, हर चीज में दक्ष थे। And then we flew to Dallas. इसके बाद हम हवाई जहाज से डलास गए। He was teaching me how to massage. While we're in the kitchen, the cooker's on the stove and I'm massaging him on the straw mat on the kitchen floor. रसोई घर में अग्नि के ऊपर वो स्टोव के ऊपर वो कुकर रखा हुआ था और मैं नीचे चटाई पे श्रील प्रभुपाद की मालिश कर रहा था। So we did that. I served Prabhupada his lunch. तो हमने वैसा किया, मैंने श्रील प्रभुपाद को भोजन परोसा। Prabhupada took a nap. प्रभुपाद ने थोड़ी नींद ली। So about a half hour later, the bell rings. आधे घंटे बाद घंटी फिर से बजी। Now, when I went into Prabhupada's room, जब मैं श्रील प्रभुपाद के कक्ष में गया, the door was right there. तो दरवाजा ठीक वहाँ पे था। Prabhupada's asana was right here. श्रील प्रभुपाद का आसन यहाँ पे था। So I didn't go around and offer obeisances in front of him. तो मैं सामने आके मैंने सामने से प्रभुपाद को प्रणाम नहीं किया। I literally just spontaneously just offered obeisances right beside him. तो मैं ठीक श्रील प्रभुपाद के बाजू में ही मैंने उन्हें प्रणाम किया। It was rather intimate. ये बहुत ही अंतरंग क्षण था। And I sat up. और मैं उठ के बैठ गया। Prabhupada looked at me. प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा। He said, "Do you take a nap after lunch?" और उन्होंने कहा, क्या तुम खाने के बाद सोते हो? Now I'm in anxiety again. अब मैं फिर से तनाव में आ गया। He's asking me about my sleep. ये मेरी नींद के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। No one in Iskcon took a nap इस्कॉन में कोई भी नहीं सोया करता था। after lunch. दोपहर के भोजन के बाद कोई नहीं सोता था। If you weren't up by 4 o'clock in the morning, you're in Maya. अगर आप सवेरे 4 बजे नहीं उठते तो आप माया में हैं। You're sleeping with Maya Devi. आप साक्षात माया देवी के साथ सो रहे हैं। This was our training. ये थी हमारी प्रशिक्षण। If you sleep more than 6 hours, you're in Maya. अगर आप 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं आप माया में हैं। And in New Vrindavan, you were lucky to get 5 hours. और नई वृंदावन में आपको 5 घंटे की नींद मिल जाए तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। So again, when he asked me, I thought he's questioning my if I'm sleeping too much, sleeping in the day. और तब मुझे लगा श्रील प्रभुपाद मेरे दिन की नींद के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। The only time devotees took naps was in the temple room during class. सभी भक्त केवल कक्षा में भागवतम कक्षा के दौरान ही सोया करते थे। That was a very popular nap time. ये सोने का एक बहुत मशहूर समय था। Sometimes temple commanders had spray bottles. कभी-कभी मंदिर टेंपल कमांडर के पास स्प्रे बॉटल हुआ करती। They couldn't wait to spray you in the face if your head went down. अगर आप गिर जाते तो आपके चेहरे पे तुरंत स्प्रे आता था। And then Prabhupada looked at me. तो प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा। He said, "I'm an old man." प्रभुपाद ने कहा मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ।
He said, and when you're old, you can't sleep too much at any one time. जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप एक समय ज्यादा नहीं सो पाते, He said, so I take a nap after lunch. इसलिए मैं खाने के बाद थोड़ा सोता हूँ. And I'm thinking, who is this person? और मैं सोच रहा हूँ कौन आदमी है भाई. This is humility. ये है विनम्रता. He had no need to say anything to me about what he was doing, but he said it. उन्हें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे क्या करते क्या नहीं करते, किंतु फिर भी उन्होंने मुझसे ऐसा कहा. Udayananda Prabhu said this morning, he had already given his heart to Prabhupada. उदयानंद प्रभु सवेरे बता रहे थे उन्होंने अपना हृदय पहले ही प्रभुपाद को दे दिया था, But then he melted it. किंतु तब प्रभुपाद ने उनके दिल को पिघला दिया. You're wondering, who am I with? आप विश्वास नहीं कर पाते मैं किसके साथ हूँ. We could understand Prabhupada was from the spiritual world. He's still in the spiritual world. हम He's समझ pure सकते थे devotee. कि श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं या आध्यात्मिक जगत से हैं या अभी भी आध्यात्मिक जगत में हैं. But again, he said it to me just to set me at ease, to be with him. किंतु उन्होंने मुझे ऐसा बताया ताकि मैं आसानी से तनाव रहित होकर उनके साथ रह सकूं. He showed me a side of him that you don't get to see. उन्होंने अपने व्यक्तित्व का वो पहलू मुझे दिखाया जो देखने को नहीं मिलता. On my very first day, और ये मेरे पहले दिन की सेवा में हुआ. he made you fall in love with him. उन्होंने ऐसा आचरण किया कि मैं उनसे प्रेम करने लगा. Such a rascal Prabhupada was. He didn't give you a choice, श्रील प्रभुपाद कोई मौका नहीं देते थे, इतने शैतान थे. but to love him more and more. किंतु आप केवल उनसे प्रेम कर सकते थे अधिक से अधिक. And then he keeps looking at me. और ये बार बार मेरी ओर देखा करते थे. Sruta Kirti, श्रुत कीर्ति, your name is too long. तुम्हारा नाम बड़ा लंबा है. You know Jayapataka's disciples, you want to hear long names, they're this long. जयपताका महाराज के शिष्यों को देखिए लंबे लंबे नाम है उनके. Sruta Kirti, just 4 syllables. श्रुत कीर्ति, 4 अक्षरों का नाम. He said, your name's too long. उन्होंने कहा तुम्हारा नाम बड़ा लंबा है. He said, from now on I'll call you Shruto. आज से मैं तुम्हें श्रुत कह के पुकारूंगा. I said, yes, Prabhupada. जी प्रभुपाद. He never called me Shruto again. उन्होंने फिर से मुझे श्रुत कह के कभी नहीं पुकारा. I was always a Shruta Kirti. मैं हमेशा श्रुत कीर्ति बना रहा. Where is Shruta Kirti? Where is Shruta Kirti if I wasn't around different time? Where is Shruta Kirti? अगर मैं प्रभुपाद के आसपास नहीं होता तो प्रभुपाद बार बार पूछते थे कहाँ गए श्रुत कीर्ति, कहाँ गए श्रुत कीर्ति. But he said that किंतु उन्होंने ऐसा कहा just to increase the attraction to him. जिससे मेरा उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाए. But it wasn't, what's the word? It was natural, it was genuine, it was real. ये स्वाभाविक था, ये नैसर्गिक था, ये असली था. Not that he had some agenda. इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं था. He wanted to get something from you. ये मुझसे कुछ पाना नहीं चाहते थे. He only wanted to give. ये केवल देना चाहते थे. Again and again and again. Give you Krishna. बारंबार बारंबार केवल कृष्ण देना चाहते थे. Give you himself. ये अपने आप को दे देना चाहते थे. So one more. Do I have time for one more quick story? Is that okay? हरि बोल. So when Paramahamsa became his secretary, Paramahamsa Maharaj, परमहंस महाराज श्रील प्रभुपाद के सचिव हुए. him and I were 2 of a kind, वे और मैं दो अलग ही किस्में थी. easygoing. बड़े आसानी से रहा करते थे. But he was so delighted to be Prabhupada's secretary. किंतु वे श्रील प्रभुपाद के सचिव बन के इतने खुश थे. So that's in Juhu, he became his तो secretary. जुहू में उन्हें सचिव नियुक्त किया गया था. When Prabhupada rang the bell, I went in, he said, get Paramahamsa. प्रभुपाद ने घंटी बजाई, मैं दौड़ के अंदर गया, उन्होंने कहा जाओ परमहंस को लेके आओ. So Paramahamsa comes into the room. परमहंस कमरे में आते हैं. He offers dandavats to Prabhupada. वे प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करते हैं. Because he's just in ecstasy to be with Prabhupada. He just fall down naturally like a stick. क्योंकि श्रील प्रभुपाद को देख के इनमें ऐसा भावातिरेक आ गया, एकदम दंडे के समान गिर पड़े. And he offered obeisances and he added some other prayers. उन्होंने प्रणाम Amagyanatamidandasya. He's down there just in ecstasy. प्रणाम कर रहे हैं और कई प्रार्थनाएं करते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं. So then some time goes by, Prabhupada rings the bell, call Paramahamsa.
कुछ देर बाद समय बीतता है, प्रभुपाद फिर घंटी बजाते, कहते परमहंस को बुलाओ। Paramahamsa too, he's like Udi, he's big guy, big round face like the moon, beautiful. प्रभुपाद परमहंस का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह, लंबे चौड़े व्यक्तित्व। So again he comes into the room. फिर से अंदर आते हैं, प्रणाम करते हैं। He's down on the ground and Prabhupada's sitting behind the desk. ये नीचे जमीन पे लेटे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद मेज के पीछे बैठे हुए हैं। And some time goes by. कुछ समय गुजरता है, Call Paramahamsa. फिर से बुलाओ परमहंस को। तीसरी बार, Third time. तीसरी बार Paramahamsa comes into the room, परमहंस अंदर आते हैं, falls down on the ground, all 2 प्रणाम meters करते of हैं। him, 2 मीटर लंबा आदमी starts offering obeisances. प्रणाम कर रहे हैं। He starts saying a prayer. अब प्रार्थना कहना शुरू कर रहे हैं। Prabhupada looks, प्रभुपाद देख रहे हैं, get up! उठो। He said, how are we going to get anything done? You lying on the floor. अगर तुम जमीन पे लेटे रहोगे तो तुमसे सेवा कैसे कराऊंगा? We always have to know what to do in service. हमें हमेशा पता होना चाहिए सेवा कैसे करनी है। It's not a ritual we're doing. ये कोई कर्मकांड नहीं है। This is our very essence to serve the spiritual master. ऐसे गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। But you have to know what it is, how to please the spiritual तो master. आपको ये पता होना चाहिए गुरुदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए। We spend our whole life, we just want to please the spiritual master. Please, Srila Prabhupada. हम अपना पूरा जीवन गुजारते हैं, हम केवल श्रील प्रभुपाद को, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। And we're all conditioned. Sometimes we fail. और हम सब बद्धजीव हैं, कभी कभी हम हार जाते हैं। But that's his compassion. He never gives up. किंतु यही उनकी कृपा है, वे कभी भी हमारा दामन नहीं छोड़ते हैं। So many times devotees would say, what is the quality you appreciate most about Srila Prabhupada? कई बार भक्त लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, श्रील प्रभुपाद के सभी गुणों में से आपको कौन सा गुण सर्वाधिक प्रिय है? I'll say different things because all of them. मैं अलग अलग बातें कहता हूँ, किंतु सबसे कौन सा बड़ा गुण है? Personally, I say I like his sense of humor so much. मुझे प्रभुपाद का विनोद, हास्यपूर्ण स्वभाव बड़ा पसंद है। But if I'm in a serious mood, I'll say it's his loyalty. किंतु यदि मैं गंभीरता से कहूँ तो ये है उनकी लगन। You know, we can walk away out that door any time. ये है उनकी प्रतिबद्धता। देखिए, हम लोग कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, But if we come back in humility, beg our forgiveness, Srila Prabhupada, please accept this. He is always there waiting for us. किंतु यदि हम आके वापस क्षमा मांगे, श्रील प्रभुपाद मुझे क्षमा कीजिए, मैं वापस आ गया हूँ, तो प्रभुपाद हमारा इंतजार करते हैं। As Udayananda described this morning, Krishna is always waiting, life after life, just waiting for us to turn to him. It's the same thing with the pure devotee. जैसे उदयानंद प्रभु ने बताया, सवेरे कृष्ण जीवन पर जीवन हमारे लिए इंतजार करते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त के साथ भी ऐसा ही होता है। So no matter our condition, no matter how overwhelmed we get, we should always know we sincerely come back. Prabhupada is always there for us. तो हम चाहे जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें ये मालूम होना चाहिए जब हम वापस आते हैं तो श्रील प्रभुपाद हमारे लिए वहाँ मौजूद होते हैं। Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. His Grace श्रुत कीर्ति प्रभु की जय। Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Charuji, for your mesmerizing talk. Your Grace mentioned that nobody could enter into Srila Prabhupada's bedroom while massage is going on, but you made us enter into that room. Many times. तो प्रभुपाद जी के कक्ष में जब मालिश चल रही होती थी, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, किंतु प्रभु जी ने अपने वक्तव्य से हम सभी को उस कमरे में प्रवेश करा दिया। So thank you very much. बहुत And धन्यवाद। now we want to heartily welcome His Holiness Jayadeva Swami Maharaj. तो अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री श्रीमद जयद्वैत स्वामी महाराज। And let us express our gratitude to His Grace Shrut Kirti Prabhu by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे। His Holiness
Jayadeva Swami Maharaj श्री is श्रीमद जयदेव स्वामी महाराज one of the most senior disciples of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के सबसे वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। Particularly when Iskcon was founded in 1968, he joined Iskcon at the age of 18 years. 1968 में 18 वर्षों की आयु में इन्होंने इस्कॉन में योगदान किया था And he was immediately accepted by Srila Prabhupada. और श्रील प्रभुपाद ने इन्हें स्वीकार किया And he has played a unique contribution in from stapling booklets, transcribing them, and then taking part in BBT services. और बीबीटी की सेवाओं में इनका अनूठा योगदान रहा है। In 1978, he accepts sannyas order of life. 1978 में इन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। Maharaj had served his whole life as editor-in-chief of Back to Godhead magazine. महाराज ने अपने जीवन पर्यंत आजीवन भगवत दर्शन पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया He है। has served as a director of the BBT from 1988 till 2017. 2017 तक इन्होंने बीबीटी के मुख्य संपादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। Also, to spread the message of Krishna consciousness systematically, he co-founded the Vrindavan Institute of Higher Education, VIHE, in 1987. 1987 में कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं को पद्धति रूप से अच्छे से दुनिया में प्रचार करने के लिए उन्होंने वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना भी की थी। So Maharaj is traveling all over the world and preaching extensively at colleges and universities worldwide, especially in America. तो महाराज दुनिया भर में भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं, विशेष रूप से अमेरिका में। And especially we are very grateful to Maharaj. He is very kind on Ujjain devotees. He keeps coming here. तो हम महाराज के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं। वे उज्जैन के भक्तों को विशेष कृपा करते हैं और यहाँ पे नियमित रूप से आते हैं। And we welcome Maharaj by one time loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Jayadeva Swami Maharaj ki, जय Srila Prabhupada ki. जय। After Maharaj's lecture, we will have dancing Kirtan by His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj. तो महाराज के प्रवचन के बाद श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज कीर्तन करेंगे। Om Jnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistham Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadhati Shapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Jatapadakamanan Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Shagrasatam Sahagana Raganatan Vitam Stam Srivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashabhanu Sute Devi Pranamami Hori Priye Vancha Kolpatarubhyascha Kripa Sindhopyevacha
Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. We're hearing earlier Ujjain Prabhu was speaking about how he was massaging Prabhupada's lotus feet for 2.5 hours every day. तो हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से उदयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों को रोज 2-2.5 घंटे मालिश किया करते थे. Shruti Kirti told how he was massaging Prabhupada. श्रुति कीर्ति प्रभु बता रहे थे कैसे वे श्रील प्रभुपाद की मालिश किया करते थे. I think I only massaged Prabhupada one time. मुझे स्मरण होता है मैंने केवल एक बार श्रील प्रभुपाद की मसाज की थी. Not full massage. Not full massage. वो पूरी मालिश नहीं थी. In Prabhupada's last months, maybe last weeks, some devotees were pressing Prabhupada's feet, massaging Prabhupada's feet. श्रील प्रभुपाद के अंतिम दिनों में कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद के पैरों की मालिश किया करते थे. So I also did that. तो मैंने भी वो किया. And Prabhupada said, whose hands are cold? और प्रभुपाद ने बोला किसके हाथ इतने ठंडे हैं? Whose hands are cold? किसके हाथ इतने ठंडे हैं? My hands. मेरे हाथ. I was afraid of Prabhupada. I was afraid of Prabhupada. मैं श्रील प्रभुपाद से बहुत घबराया करता था. I'd seen in 1968, 1969, so many servants of Srila Prabhupada fell down, left. मैंने देखा श्रील प्रभुपाद के कई सेवकों का पतन होते हुए. The expression is familiarity breeds contempt. You know that expression? There's an expression, familiarity breeds contempt. जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि साथ में रहने से हम किसी व्यक्ति की स्थिति को भूल जाते हैं. We associate with someone and we take that person for granted. हम किसी व्यक्ति की संगति करते हैं और हमें लगता है कि ठीक है ये तो साधारण व्यक्ति है. One starts to think that the spiritual master is an ordinary person. तब हमें लग सकता है कि हमारे गुरुदेव भी एक साधारण व्यक्ति हैं. One becomes critical. तो ऐसे में व्यक्ति गलतियां निकालने लगता है. Why is he scolding me? ये मुझे क्यों डांट रहे हैं? So I knew I had a critical nature. मैं जानता था मैं गलतियां निकालना. And I was afraid if I associate with Srila Prabhupada very closely, then I may become critical. और यदि मैं श्रील प्रभुपाद के बहुत करीब जाऊं तो शायद मैं गलतियां देख सकता हूं. Fall down. और फिर मेरा पतन हो सकता है. So I never really wanted to travel with Prabhupada. तो वास्तव में मैं प्रभुपाद के साथ कभी भी भ्रमण नहीं करना चाहता I था. was too afraid. मुझे बहुत डर लगता था. But Prabhupada gave me the right engagement, किंतु श्रील प्रभुपाद ने मुझे सही सेवा प्रदान की. editorial work, संपादन का कार्य, which means fault finding. जिसका मतलब है गलतियां निकालना. Authorized fault finding. प्रामाणिक गलती निकालने वाला. Over the years, I had what added up to some association with Prabhupada. और आने वाले कुछ वर्षों में मुझे कई बार श्रील प्रभुपाद की संगति का अवसर प्राप्त हुआ. But I always felt that my most important association with Srila Prabhupada was by service. किंतु मुझे लगता है श्रील प्रभुपाद की संगति करने का सबसे अच्छा मौका मुझे सेवा के माध्यम से प्राप्त हुआ था. In 1968, 1969, starting, we would be. I was from the very beginning involved with the press activities. 1968-1969 के साल की बात है. मैं हमेशा प्रेस के कार्यकलापों से जुड़ा रहा करता था. I saw everyone who knew how to drive was always driving.
मैंने देखा जिसको गाड़ी चलाना आता है वो हमेशा गाड़ी चला रहा है, Everyone who knew how to cook was always in the kitchen. जिसको रसोई करना खाना बनाना आता है वो रसोई घर में रहता है। And so I knew I wanted to be with the books. और मैं जानता था मुझे पुस्तकों के साथ रहना है, So I got myself into that corner. तो मैंने अपने आप को उस क्षेत्र में झोंक दिया। So we would, so I was involved in typing Srila Prabhupada's dictation, later editing, तो मैं श्रील प्रभुपाद के पत्रों का टंकण किया करता था। always working in the press activities. मैं हमेशा प्रेस के कार्यकलापों में संलिप्त रहता था And we used to be the first ones to read Prabhupada's books और हमें सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता था। before anyone knew what was in the Krishna book. We were hearing it and discussing. इससे पहले कि किसी को पता हो कि कृष्ण पुस्तक में क्या है, हमने उसे सुन रखा था और हम उसके ऊपर चर्चाएं किया करते थे। Or any of the books. सारी पुस्तकों के लिए सत्य है। So we felt that we had very close association with Srila Prabhupada by that sound and that service. तो हमें लगता था कि हमें श्रील प्रभुपाद के वाणी के माध्यम से उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। And Srila Prabhupada considered it important. और श्रील प्रभुपाद इसे बहुत महत्वपूर्ण सेवा मानते थे। One time he visited the press when it was in Boston, एक बार वे प्रेस में देखने के लिए आए जब वे प्रेस बोस्टन में स्थित थी, and he said, "This is the heart of Iskcon." और उन्होंने कहा ये इस्कॉन का हृदय है। Yes. हरि बोल। And then a devotee said, "Srila Prabhupada, you're the heart of Iskcon." किंतु एक भक्त ने कहा श्रील प्रभुपाद आप इस्कॉन के हृदय हैं। And Prabhupada said, "And you know who is in the heart?" और श्रील प्रभुपाद ने कहा क्या तुम जानते हो हृदय में कौन है? That's Krishna. कृष्ण। So one time the press was in Boston, that means the far east coast of America. तो एक समय प्रेस बोस्टन में हुआ करती थी जो अमेरिका का पूर्वी छोर है। And Prabhupada was going to be at the Rath Yatra in San Francisco on the west coast. और श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा में भाग लेने वाले थे जो कि पश्चिमी छोर है। At that time there was only one Rath Yatra in North America, that was San Francisco. उन दिनों उत्तरी अमेरिका में केवल सैन फ्रांसिस्को मंदिर से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता था And that was a big, और ये बड़ी विशाल रथ यात्रा थी। and the press manager had an idea और उस समय प्रेस मैनेजर को एक विचार आया that all of us press workers could jump in a van and drive across the country. कि सभी प्रेस के कार्यकर्ता एक वैन में बैठ के देश पार करके उस ओर जाएंगे। And driving day and night, it takes about 3 days. और उन दिनों उस देश को पार करने के लिए 3 दिनों का समय लगता था। So we could drive across the country in 3 days, तो हम 3 दिनों में उस देश को पार करेंगे and then we could be there in San Francisco with Srila Prabhupada और हम वहाँ जाके सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद के दर्शन करेंगे and have the association of Krishna's pure devotee in the Jagannath Rath Yatra. और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त करेंगे। And then we could jump back in the van 3 days and be back. और फिर से हम वैन में बैठेंगे और 3 दिनों का सैर सपाटा करके अपने मंदिर वापस पहुंच जाएंगे। So that was the plan, तो ये विचार था। and Prabhupada heard about it, तो प्रभुपाद ने इस योजना को सुना and he said, "What do they want to do that for? What do they want to do that for? श्रील प्रभुपाद ने कहा वे लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? They should stay there and do their service." उन्हें वहाँ रहना चाहिए और अपनी सेवा करनी चाहिए। So that means to serve the spiritual master is even more important than being in his physical presence. तो गुरुदेव की सेवा करना उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी में रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Not that the presence of the physical presence of the spiritual master isn't a treasure. भगवान के शुद्ध भक्त की मौजूदगी में उनके साथ रहना, सेवा करना, ये वास्तव में संपदा के समान है। And those who had that association were so fortunate. और जिन्हें ये संगति प्राप्त हुई है ये वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं। But in that instruction, Prabhupada emphasized that they should do their service. किंतु उस निर्देश में श्रील प्रभुपाद ने पुरजोर रूप से कहा कि उन्हें अपनी सेवा करनी चाहिए। One time, I didn't write to Srila Prabhupada very often.
I didn't write to Srila. मैंने श्रील प्रभुपाद को कई बार चिट्ठी नहीं लिखी. The instruction was well known that Prabhupada gets too many letters. Devotees shouldn't all write to Prabhupada. Temple presidents can like that. श्रील प्रभुपाद के पास बहुत चिट्ठियां आया करती थी, तो ऐसी बात प्रचलित थी कि मंदिर अध्यक्ष से ही पूछना चाहिए, प्रभुपाद को परेशान नहीं करना चाहिए. So I tried not to disturb Prabhupada with unnecessary mail. तो मैंने बेकार में प्रश्न करके श्रील प्रभुपाद को विचलित करने का प्रयास कभी नहीं किया. But kabhi when there was something, we would write to him. ये तो कभी कभी जब कोई मुद्दा आता था तो मैं श्रील प्रभुपाद को लिखा करता था. So we had some question about Krishna book. There was some portion that was unclear. I think that the tape sort of, Prabhupada might have clicked it quickly and we couldn't hear what was there. तो श्रील प्रभुपाद के कृष्ण पुस्तक के बारे में हमारे कुछ प्रश्न थे, टेप में कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था और मैं पूछना चाहता था. So we asked should this be, what to do. तो हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या करें. And Srila Prabhupada just wrote on the back of the letter, Yaduvada Parishat. यदुवर परिषद. और श्रील प्रभुपाद ने चिट्ठी के पीछे लिख के भेजा यदुवर परिषद. That's all he. बस ये लिख के भेजा. The meaning was, we were asking a question about a verse, Jayati Janani Vaso Devaki Janmavado Yaduvadu Parishad Sudurabir. The verse appears just at the end of 10th canto. तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंत में ये श्लोक आता है, जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद. So the instruction was meant for Pradumna, the Sanskrit editor. तो ये निर्देश श्रील प्रभुपाद के संस्कृत संपादक प्रद्युम्न प्रभु के लिए था. The purport was, this is the word that I'm translating, you figure it out. श्रील प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य दिया कि इस शब्द का अनुवाद मैं कर रहा हूँ, तुम विचार करो. And on the same letter, he wrote me an instruction. और उसी पत्र में उन्होंने मुझे भी एक निर्देश दिया. Not exactly verbatim, but he said, thank you very much for your devoted service. उन्होंने लिखा कि तुम्हारी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Continue your prescribed duty and train others. अपना नियत कर्म करते रहो, सेवा करते रहो, दूसरों को प्रशिक्षण दो. I wasn't the only person he gave that instruction to. मैं वो एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसको प्रभुपाद ने ये निर्देश दिया था. But it's a very important instruction. किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है. Sometimes, we want to continue our prescribed duty. कभी-कभी हम अपनी नियत सेवा करते रहना चाहते हैं. And sometimes we so much want to continue our prescribed duty that we devote a lot of energy to making sure that no one else takes over our prescribed duty. और कभी-कभी हम अपनी नियत सेवा से इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई और ये सेवा ना ले ले. This is my service. ये मेरी सेवा है. I don't want anyone else मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा. getting in. This is not what Srila Prabhupada wanted. तो श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं चाहते थे. I remember I was sometimes like that. मुझे स्मरण है, मैंने कभी-कभी ऐसा देखा है. I was concerned if someone else shares in this service, what will happen to me? और मैं सोचता था कि अगर कोई और व्यक्ति मेरी सेवा ले ले तो मेरा क्या होगा. What about my service? तो मेरी सेवा कहाँ जाएगी. So that's neophyte mentality. तो ये नौसिखिए की मानसिकता है. As if Krishna didn't have more service to give us. मानो कृष्ण के पास हमें देने के लिए कोई सेवा ही नहीं है. If someone takes over from us, then it's not that we'll be unemployed. अगर कोई और हमसे सेवा ले ले तब तो हम बेरोजगार हो जाएंगे. Krishna has so much more service to do. कृष्ण के पास कराने के लिए इतनी सारी सेवाएं हैं. So Prabhupada gave that instruction. Continue your prescribed duty and train others. तो श्रील प्रभुपाद ने निर्देश दिया, अपनी नियत सेवा करते रहो और दूसरों को प्रशिक्षण दो. So that others will learn. ताकि दूसरे सीख सकें. And others will become capable. और दूसरे व्यक्ति योग्य बनेंगे. And then you increase the overall capability. और इससे कई लोग योग्य बनेंगे, योग्यता अर्जन करेंगे. You can do more. और इससे आप ज़्यादा सेवा कर पाएंगे. If everything always depends on one person,
यदि हर वस्तु एक व्यक्ति पर निर्भर हो then you're at risk तो बहुत बड़ा खतरा है. that one person can die, that anything can happen. उस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए तो बड़ी मुश्किल होगी And then everything, the whole service collapses. और पूरी की पूरी सेवा ध्वस्त हो जाएगी. So Prabhupada knew that, तो श्रील प्रभुपाद इसे जानते थे and he gave that very practical instruction that train others. और श्रील प्रभुपाद ने बड़ा व्यवहारिक निर्देश दिया, दूसरों को प्रशिक्षण दो. This is the Brahmin's business. Patan, patan, yajan, yajan, dana, pratigraha. यही ब्राह्मण का कार्य है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह. He becomes learned and he makes others learn it. ये स्वयं प्रशिक्षित होता है और दूसरों को प्रशिक्षित करता है. Not that he's satisfied, I know more than everyone else, and I'm not telling them. ये सोच के संतुष्ट नहीं होता, मुझे दूसरों से अधिक पता है और मैं उनको बताने नहीं वाला. The secrets are mine. मेरे सारे रहस्य. He makes others learn it. वो दूसरों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है. Or in terms of practical activities, he teaches others. हमारे सभी व्यवहारिक कार्यकलापों को हमें दूसरों को प्रशिक्षित करना चाहिए. Patan, patan, yajan, yajan. He performs yagyas, he teaches others how to perform yagyas. पठन पाठन यजन याजन ये स्वयं यज्ञ करते हैं और दूसरों को यज्ञ करना सिखाते हैं. Patan, patan, yajan, yajan. Yeah. So that we should do. तो हमें ऐसा जरूर करना चाहिए. Continue our prescribed duty and train others. हमें अपनी सेवा करते रहने चाहिए और दूसरों को प्रशिक्षित करना And चाहिए. we saw that Prabhupada did that. हमने श्रील प्रभुपाद को ऐसा करते देखा था. He was the most expert of managers. श्रील प्रभुपाद सबसे अधिक दक्ष प्रबंधकों में से एक थे. And yet, around 1970, he created this GBC, और फिर भी उन्होंने 1970 में जीबीसी की स्थापना की. Governing Body Commission, गवर्निंग बॉडी कमीशन. and gave them management responsibility for managing the whole society. और पूरे समाज की परिचालना की व्यवस्था जीबीसी को सौंपी गई. And without committing too much offense, I think I can say that some of them were terrible managers. और बगैर ज़्यादा अपराध करे मैं कह सकता हूँ कि इनमें से कुछ बहुत ही घटिया प्रबंधक हैं. Udayanand, am I lying, Prabhu? Okay, it's confirmed. उदयानंद प्रभु क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, ठीक कह रहे हैं. In fact, Prabhupada one time he said about one of the members, he said, he cannot manage. एक प्रबंधक के बारे में श्रील प्रभुपाद ने कहा था, वो प्रबंध नहीं कर सकता. So, there were some very capable men. कुछ बहुत ही योग्य व्यक्ति हुआ करते थे. Tamal Krishna Maharaj always comes to mind. तमाल कृष्ण महाराज उनमें से एक थे. And there were others who were not capable or simply not managers. और ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जो कि योग्य नहीं थे या फिर प्रबंधक थे ही नहीं. But Prabhupada considered them trustworthy. Prabhupada considered them किंतु श्रील sincere. प्रभुपाद इन्हें बड़ा निष्ठावान, बड़ा भरोसेमंद मानते थे. And Prabhupada thought also that some of them can learn. और श्रील प्रभुपाद मानते थे कि किसी न किसी दिन ये प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे. But the point that I wish to make is he didn't wait till he got people who were qualified like him. मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि श्रील प्रभुपाद तब तक इंतजार नहीं कर रहे थे जब तक उन्हें अपने समान योग्य व्यक्ति ना मिल जाए. When I have 12 first-class managers, then I'll form a governing body. जब मेरे पास 12 सुयोग्य व्यक्ति हों तब मैं गवर्निंग बॉडी बनाऊंगा. Early on, he took basically a batch of kids and put them in charge of management. आंदोलन की शुरुआत में ही उन्होंने बच्चों में से किसी को उठाया और उन्हें प्रबंधन के कार्य में लगा दिया. And trained them as far as possible. जहाँ तक संभव हो उन्हें प्रशिक्षित किया. Because Prabhupada knew that I can't do everything. क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे मैं सब कुछ नहीं कर सकता. I don't want to do everything. मैं सब कुछ करना भी नहीं चाहता. And I could be, as he used to say, out of the scene at any moment. और श्रील प्रभुपाद जैसा वे कहा करते थे मैं किसी भी क्षण जा सकता हूँ. And therefore he wanted to create a group of managers to take responsibility. इसलिए श्रील प्रभुपाद प्रबंधकों के एक संगठन बनाना चाहते थे जिसके माध्यम से पूरे समाज की व्यवस्था की जा सके. So, and in all the departments, that story is famous, how he installed deities in Australia or New Zealand and apologized to the deities that, I'm leaving you in the hands of these mlechas, you please
accept their service. ये घटना बड़ी प्रसिद्ध है जब न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के किसी मंदिर में प्रभुपाद ने गौर निताई की स्थापना की और उनसे कहा, उनसे प्रार्थना की, भगवान की स्थापना की और उनसे प्रार्थना की, मैं आपको इन मलेच्छों के हाथ में छोड़ रहा हूँ, अब आप व्यवस्था कीजिए। But they'll learn. They'll be trained. They'll learn. किंतु इन्होंने सीखा, प्रशिक्षण लिया। Prabhupada performed his prescribed duties and he trained others. श्रील प्रभुपाद ने इस कार्यक्रम को आगे चलाया और दूसरों को प्रशिक्षण दिया। So that was an important instruction. Whether you're the cook, or whether you're a pujari, or whether you're a manager or a kirtan leader, we're all meant to train others. चाहे आप कीर्तन के बड़े अच्छे कीर्तनीय हों, रसोइये हों, चाहे पुजारी हों, चाहे प्रबंधक हों, हमें सभी को दूसरों को प्रशिक्षण देना चाहिए। And Krishna will always give us more service to do. और श्री कृष्ण हमें करने के लिए बहुत सारी सेवाएं देंगे। Don't worry. चिंता मत करो। Let's see. Well, let me look at my notes and see what I should talk about in what order. I was initiated in 1968. 1968 में मुझे दीक्षा मिली थी। I'd come to the society 2 months earlier. मैं 2 महीने पहले इस्कॉन में आया था। And it wasn't that I got initiated in 2 months because I was so advanced. Anyone got initiated in 2 months. और ऐसा नहीं था कि मैं बड़ा योग्य था इसलिए मुझे दीक्षा मिली थी, जो भी आता था उसको दीक्षा मिलती थी। So, yeah, people ask, how did you meet Prabhupada? I joined Iskcon, and then I met Prabhupada. People ask, how did you meet Prabhupada? You know, like Hayagriva met Prabhupada on the street, and so I joined Iskcon, and then I met Prabhupada. तो लोग प्रश्न करते हैं आप प्रभुपाद से कैसे मिले, तो मैं उनको बताता हूँ मैं इस्कॉन में आया और मुझे प्रभुपाद मिले। He'd gone to India after his heart attack. उनके हृदयाघात के पश्चात वे भारत आए थे। Then he joined. तब वे आए। Then I joined, and then he came back to New York. तब मैंने इस्कॉन में योगदान दिया और इसके बाद श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए। And that's when I met him. और तब मैं श्रील प्रभुपाद से मिला। And not in any particular order, but back at that first visit, one time he asked me, "Why you are so skinny?" और श्रील प्रभुपाद ने मुझसे प्रश्न किया, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? I don't know. और मैंने कहा मुझे नहीं पता प्रभुपाद। I didn't have an explanation. मेरे पास इसकी कोई व्याख्या मौजूद नहीं थी। At my initiation, Prabhupada did everything himself, made the fire and chanted the mantras, did everything. मेरे दीक्षा समारोह में श्रील प्रभुपाद ने सारी व्यवस्था की, अग्नि लगाई, उसके बाद सारे मंत्र बोले। He did everything in those days. उन दिनों वे स्वयं सब कुछ किया करते थे। And then he handed me my beads. He said, "Your name is Charan." शरणम Charan. Charan. जय राम हो। तो उन्होंने मुझे मेरा दीक्षा नाम पकड़ाया और मुझे कहा मेरा नाम होगा जय राम। And I thought, because Jairam was sitting right behind me. और जयराम तो मेरे पीछे बैठे हुए थे। So I was very quiet. And तो मैं एकदम चुप था। then Prabhupada's assistant at the time, Jaigor Sundar, he said, "Swamiji, there already is a Jairam." तब श्री प्रभुपाद के सचिव ने उनको कहा कि स्वामी जी जयराम नाम का व्यक्ति तो पहले से है। All right, then Jaya Dvait. तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है जय अद्वैत। Prabhupada would give classes Monday, Wednesday, and Friday evening. श्री प्रभुपाद हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को कक्षाएं दिया करते थे। And on the other nights we would go up to Prabhupada's apartment and he would talk about different subjects. और बाकी समय हम प्रभुपाद के अपार्टमेंट में जाते थे तो श्री प्रभुपाद अलग-अलग विषयों पे बातें किया करते थे। Very informally. बड़े ही अनौपचारिक रूप से। I remember one time
we talked about different things, and then the devotees were just, we sort of had nothing more to ask or say. मुझे एक बार स्मरण है हम अलग अलग विषयों पे बातें कर रहे थे और तब भक्तों के पास सारे प्रश्न समाप्त हो गए And the devotees were just looking at Prabhupada. और सभी भक्त प्रभुपाद की ओर देख रहे थे And Prabhupada was looking at us. और प्रभुपाद भी उनकी ओर देख रहे थे And we're looking at Prabhupada. और हम प्रभुपाद को देख रहे थे And then Brahmananda Prabhu spoke. और तब ब्रह्मानंद प्रभु बोले He said, Swamiji, you have so many affectionate children. उन्होंने कहा स्वामी जी आपके इतने सारे प्रेमालु बच्चे हैं And Prabhupada said, yes. प्रभुपाद ने कहा हाँ And without botheration of wife. और वो भी बिना पत्नी के In those days, in New York City, there were different yoga societies headed by sort of, there were some different yogis who had come to America from India. उन दिनों न्यूयॉर्क शहर में भारत से आने वाले कई सारे योगी आके बसा करते थे और योग सोसाइटी खोला करते थे We called them uptown swamis हम उनको अप टाउन स्वामी कहा करते थे because they were holding their programs in the more affluent uptown area of New York. क्योंकि ये न्यूयॉर्क के बड़े धनाढ्य क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम किया करते थे Wealthy ladies and so on. बड़े पैसे वाले लोगों के यहाँ कार्यक्रम करते थे And there was one young girl who was attending such meetings. और एक जवान लड़की थी जो इन कार्यक्रमों में भाग लेती थी And then she had been coming to our classes also for some weeks. और वो हमारे कक्षाओं में भी कुछ सप्ताहों से भाग ले रही थी And then Prabhupada came. और इसके बाद प्रभुपाद आते हैं So she attended Prabhupada's class. तो उन्होंने प्रभुपाद के कक्षा में भाग लिया And when Prabhupada called for questions, she asked a question. और जब प्रभुपाद ने पूछा कोई प्रश्न है तो उन्होंने एक प्रश्न किया She said, Swamiji, isn't it true that everything is ultimately one? स्वामी जी क्या ये सत्य नहीं है कि अंततः सब कुछ एक है And she said it in a kind of knowing voice, और उन्होंने एक जानने के स्वर में ऐसा कहा expecting that Srila Prabhupada would confirm her realization. और वो अपेक्षा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद उनकी अनुभूति को उसकी पुष्टिकरण करेंगे And Prabhupada said no. प्रभुपाद ने कहा नहीं And he gave the example. He said that there are 9 holes in the body. श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया तुम्हारे शरीर में 9 छेद हैं He said, but does it mean that we can put food here क्या इसका ये मतलब है तुम खाने को यहाँ घुसा सकती हो or here या फिर यहाँ घुसा सकती हो or here? या फिर यहाँ घुसा सकती हो He said, no, you have to put the food in the stomach. श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं तुम्हें खाने को पेट में डालना होगा The system was in the evening, there's 26 Second Avenue, and behind 26 Second Avenue there's a courtyard, and then Prabhupada's apartment is there. व्यवस्था ये थी कि 26 सेकंड एवेन्यू के पीछे एक आंगन था और उसके पीछे श्रील प्रभुपाद के रहने का कक्ष था So we would have kirtan in the storefront, तो सामने दुकान में हम लोग कीर्तन किया करते थे and then Prabhupada would come down from his apartment and walk through the side door and sit on his dais. Then he would lead kirtan, and then class, and then we'd have another kirtan. और श्रील प्रभुपाद अपने कक्ष से उतर के नीचे आते थे और उसके बाद वे कीर्तन किया करते थे So one devotee was leading kirtan. In fact, Charan was leading kirtan. तो एक बार एक भक्त जय राम प्रभु ये कीर्तन कर रहे थे
And he was a good singer, and he was quite a sweet voice also. और ये बड़े अच्छे गायक थे और इनकी बड़ी मीठी बोली थी. And the devotees were chanting, Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nata Narayan Vasudev. और भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. And with great enthusiasm. बड़े उत्साह से कीर्तन कर रहे थे. And because they'd read this mantra in the purport to Srimad Bhagavatam. क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में इस मंत्र को पढ़ा था. So they figured this would be nice for तो Kirtan. उन्हें लगा कि ये प्रामाणिक है, बड़ा अच्छा है. So Prabhupada came in, he sat down on the asana, devotees offered obeisances. प्रभुपाद आए, व्यासासन पर बैठे, भक्तों ने उन्हें प्रणाम किया. Prabhupada, what is that? Krishna, Govinda? प्रभुपाद ने बोला वो क्या है, कृष्ण गोविंद? Then devotees, that's not bona fide, Srila Prabhupada? एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद वो प्रामाणिक नहीं है? Prabhupada said, this is chanted by the Mayavadis. प्रभुपाद ने कहा ये मायावादी लोगों का मंत्र है. It's not that every popular mantra is bona fide. ऐसा नहीं है कि हर प्रसिद्ध मंत्र प्रामाणिक हो. And it was in the purport, but Prabhupada was just citing it as a popular understanding, not as a Gaudiya Vaishnava Kirtan. तो ये तो तात्पर्य में लिखा था, किंतु श्रील प्रभुपाद उसकी उद्धृति इस प्रकार से दे रहे थे कि एक प्रसिद्ध कविता है, किंतु ये कोई प्रामाणिक वैष्णव भाष्य नहीं है. So Prabhupada said, Sri Krishna Chaitanya you can chant? Sri Krishna Chaitanya you can chant? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा तुम लोग श्री कृष्ण चैतन्य जप कर सकते हो. And this was early, no one really knew how to lead kirtan of Sri और Krishna. किसी को पता नहीं था कि श्री कृष्ण चैतन्य कीर्तन कैसे किया जाए. And Prabhupada said, all right, then he took the mridanga and he led प्रभुपाद ने कहा ठीक है. प्रभुपाद ने मृदंग लिया और वे बजाने लगे. Sri Krishna Chaitanya and Hare Krishna. श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण इस And the प्रकार से. whole room was in ecstasy. और पूरा रूम भावातिरेक में नाचने लगा. Srila Prabhupada, you can hear it on tapes. Prabhupada would begin the kirtan very slowly, आप सुन सकते हैं श्रील प्रभुपाद कीर्तन की शुरुआत बड़ी धीमी गति से किया करते थे. quite slow and meditative. बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक, धीमी गति से. And gradually he would speed up. और धीरे धीरे वे गति को बढ़ाया करते थे. And you can hear the Prabhupada's playing the kartals like this. और आप सुन सकते हैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद करताल बजाया करते थे. And the young enthusiastic devotees are speeding up. और नए उत्साही नौजवान भक्त बड़े जोर जोर से करताल बजाने लगते थे. And Prabhupada's playing kartals. और श्रील प्रभुपाद गति को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार से करताल बजाते थे. With mixed success. और उसमें उन्हें मिश्रित सफलता मिलती थी. The day after I was initiated, I went to Boston. मेरी दीक्षा के अगले दिन मैं बॉस्टन गया. It's about 3 hours drive north. 2 या 3 घंटे की यात्रा थी. Because Prabhupada's assistants at that time were a married couple, Gaurasundar Prabhu and Govinda Dasi. क्योंकि श्रील प्रभुपाद के सेवक उस समय एक गृहस्थ दंपति हुआ करते थे, गौर सुंदर प्रभु और गोविंद दासी. Our Govinda Dasi is still quite active. और उन दिनों गोविंद दासी बहुत चुपचाप रहा करती थी. And her health was quite weak. किंतु उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती थी. She was the cook for Prabhupada, ये प्रभुपाद की रसोई करती थी. but she was having a hard time because of her health. किंतु उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उनको रसोई करने में असुविधा हो रही थी. So the idea was that someone should come from New York to assist her. तो विचार ये था कि किसी को न्यूयॉर्क से आके उनकी सेवा में सहायता करनी चाहिए. So there was some discussion between Brahmananda Prabhu
and other leaders. तो ब्रह्मानंद प्रभु और अन्य नेताओं के बीच में चर्चा चल रही थी. And someone suggested that one devotee, Devananda, could go. और किसी ने कहा कि देवानंद को जाना चाहिए. He was a good cook. वो एक अच्छा रसोइया था. And Satsvarup Maharaj said, what about this boy? और सतस्वरूप महाराज ने कहा इस लड़के के बारे में क्या कहें. And I'd never cooked anything in my life. और मैंने जीवन में कुछ भी नहीं बनाया था. But somehow or other it was agreed that Prabhupada will be in Boston 4 weeks. So Jayadvaita can go first for 2 weeks. And if all is well, that's good. Otherwise, if he messes up, Devananda can come for the next 2 weeks. And if Jayadvaita messes up, Devananda can come sooner. तो विचार ये था कि जयद्वैत वहाँ जाके 2 सप्ताह तक रसोई की सेवा में सहायता करेंगे और यदि कुछ गड़बड़ करें तो देवानंद प्रभु जाएंगे और अगर ठीक करें तो 2 सप्ताह के बाद देवानंद प्रभु जाएंगे. So that's how I got to be assisting Prabhupada for 2 weeks. इस प्रकार से मुझे श्री प्रभुपाद की रसोई में 2 सप्ताह तक सहायता करने का अवसर प्राप्त हुआ. He was staying in a small house श्री प्रभुपाद छोटे-छोटे घरों में रुका करते थे and doing his translation work and going to the temple for classes. और ये अपने अनुवाद का कार्य कर रहे थे और मंदिर में आके कक्षा दिया करते थे. And Govindasi and I were, Prabhupada always called her Govindasi. और मैं और गोविंद दासी वहाँ पे जाके रसोई करते थे. And Prabhupada always called, not Govindadasi, Govindasi. और श्री प्रभुपाद हमेशा उन्हें गोविंद दासी कहा करते थे, गोविंद दासी नहीं. Govindasi. गोविंद दासी. So we were cooking for, and Prabhupada was eating very simple. और श्री प्रभुपाद बहुत ही सादा भोजन किया करते थे. No one knew really how to cook. किसी को पता ही नहीं था रसोई कैसे करते So हैं. Prabhupada was taking some rice, प्रभुपाद थोड़े चावल खाते थे, some dal, थोड़ी दाल, some chapati, थोड़ी चपाती, some spinach mixed with a little chickpea and some potato. कुछ पालक, थोड़ा आलू और थोड़ी सी मटर की दाल. Little tomato. And some, Brussels sprouts, do you know what Brussels sprouts are? The acorn vegetable. One other little और एक vegetable. प्रकार की सब्जी जो वहाँ मिलती थी उसको पकाया करते थे. And the spicing was very simple. Salt, black pepper, little turmeric, little cumin, a little chili, bas. और मसाले बड़े सिंपल, बड़े सरल थे. थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा जीरा, बस. Simple. बहुत ही सरल. Well, we were having trouble with the chapatis और हमको चपाती में बड़ी समस्या होती थी because the stove was an electric stove. क्योंकि ये बिजली का स्टोव था. With a gas stove, it's easy, right? गैस की रसोई पे करना आसान होता है. But with the electric stove, we were having trouble because you cook the chapati on the electric, and the electric is not steady. क्योंकि जब बिजली के स्टोव पे आप रसोई करते हैं तो चपाती इसमें बिजली से गर्मी जो है वो ठीक नहीं मिलती. It's getting hotter. ये गर्म होता रहता है. And if you turn it down, it gets cooler. और इसको नीचे करो तो ठंडा हो जाता है. But you don't get a steady heat. किंतु आपको एक समान गर्मी नहीं मिलती. So the chapatis, either they were becoming brittle, तो या तो चपातियों का कोयला होता था or uncooked. या तो वे कच्ची रह जाती थी. And how do you blow up the chapati? और चपाती को फुलाएंगे कैसे? Because with an electric burner, there's no flame. क्योंकि रसोई बिजली की स्टोव में तो कोई अग्नि की लौ होती नहीं. So Srila Prabhupada was getting these chapatis that were chapatis in name only. तो श्रील प्रभुपाद को ऐसी चपातियाँ खाने को मिलती थी जो सिर्फ नाम के वास्ते चपाती थी. And as Shruti Kirti Prabhu said, 1 day, 2 days. और जैसा कि श्री कीर्ति प्रभु ने बताया, 1 बार, 2 बार, 3 बार. Third day he said, you make the dough and then call me. श्रील प्रभुपाद ने कहा आटा तैयार करो फिर मुझे बुलाओ. So that's what we did. तो हमने ऐसा ही किया. And Prabhupada came in. प्रभुपाद अंदर आए. His room was just this far. उनका कमरा केवल पास में ही था. And the first thing he did, he took a pan from the stove and turned it upside down श्रील प्रभुपाद ने उस तवे को लिया और ऊपर से नीचे पलट दिया over the electric burner. उस इलेक्ट्रिक बर्नर के ऊपर. So now the heat is coming up from the electric burner and he's getting steady heat.
और अब किसी प्रकार से उस बर्नर को एक समान ऊर्जा प्राप्त हो रही थी And Prabhupada was getting perfectly cooked chapatis. और प्रभुपाद को बहुत ही अच्छी चपातियाँ खाने को मिली. But you know, there's a system, I don't know if any of you know it, but you can cook like a stack of chapatis, 8 or 10 at once. मैं नहीं जानता कोई एक तरीका है पद्धति जिससे 8-10 चपातियाँ एक साथ बनाई जा सकती. Some of you know that system? क्या आप में से कोई इस पद्धति को जानता है? No? Yes? No. That's it. But Prabhupada knew, you know how to do it, huh? आप लोग जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं? That you put the chapati down on one side, then you put another chapati on, and you flip the two, and now you, एक के ऊपर दूसरी रखो, दूसरे के ऊपर तीसरी रखो, फिर उसको पलट दो. and then you flip one of them and you turn it over, फिर एक को रख के दूसरी पलट दो. and soon there's always a new side hitting the flame, और हमेशा एक नई तरह को अग्नि and- मिलती है and a new completed chapati coming off the stack. और ऊपर से है गरम-गरम चपातियाँ तैयार होके बाहर निकलती. So Prabhupada was cooking 10 chapatis, तो प्रभुपाद एक साथ 10 चपातियाँ बना रहे थे and we were, और हम सब लोग देख रहे थे and we couldn't keep up. We were rolling the chapatis, but faster, faster. और हम इतनी जल्दी चपाती बना ही नहीं पा रहे थे. चपाती बेलने में समय लग रहा था. But then how do you blow up the chapatis? कि तो आप चपाती को फैलाएंगे कैसे? So Prabhupada reached into the oven and he pulled out the grill, you know, the तो frame, प्रभुपाद ने ओवन को खोला, उसमें से ग्रिल बाहर निकाली and he put it over 2 burners on the left, और बाएं तरफ 2 बर्नर के ऊपर से रख दिया and threw the chapati, each a chapati on the grill, and और एक-एक चपाती को उस पे फेंकते गए और वो फूलती गई. all the chapatis were blowing up. सभी चपातियाँ फूल गई. There was one of my older godbrothers. Older godbrother back then meant 6 months older, 1 year older in terms of joining. तो तब मेरे एक वरिष्ठ गुरु भ्राता ने मुझे बताया, वरिष्ठ मतलब मुझसे 6 महीने पहले जो इस्कॉन में आए थे वो. Maybe a year and a half. हो सकता है 1-1.5 साल पहले आए हूँ. And it was a big thing if someone was older, that was right. और उस समय कोई बड़ा होता था, ये बहुत बड़ी बात थी. And it was true because all the devotees, most of the devotees there had all had personal association with Prabhupada in earlier days. और उन शुरुआती दिनों में अधिकांश भक्तों को श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत संगति मिलती थी. So that was very impressive to me actually, because when I joined, the devotees were all speaking about Prabhupada from their personal experience. तो ये मेरे लिए बड़ा आकर्षणीय था क्योंकि आने वाले सभी भक्त श्रील प्रभुपाद के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में साझा कर रहे थे. Not all of them knew the philosophy very well, उनमें से अधिकांश लोगों को दर्शन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, but they had personal experience with Srila Prabhupada. किंतु इन्होंने श्रील प्रभुपाद के साथ व्यक्तिगत स्तर पे विनिमय किया था. That had reminded me of something, but I forgot what it reminded me of. इससे मुझे कुछ बात स्मरण आती है. Anyway, where am I on time? Keep going? Kab tak? Now, huh? Okay, let me just see if there's a natural stop. Yeah, that's a good place to stop. That the whole 26th Avenue was enlivened by the association of devotees who'd had this, you know, you read about it in probably Lamrita, this shoulder-to-shoulder association with Srila Prabhupada. तो 26 एवेन्यू में ऐसे भक्त थे जिन्हें श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत संगति प्राप्त हुई थी. So much so that when I joined in 1968, there were now there was New York, there was San Francisco, there was Montreal, there was a 4th center in America. तो न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, इस प्रकार से अमेरिका में 4 सेंटर तब तक खुल चुके थे. And Prabhupada was traveling. और प्रभुपाद उस समय भ्रमण कर रहे थे. So I figured that basically I'd missed everything. तो मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ खो दिया. But it's a fact that those days before I joined were very special, and those devotees who joined at that time were very special.
now that reminded me of what the story was. Ek aur story. तो ये बात मुझे स्मरण कराती कि उसके मेरे आने के, मेरे इस्कॉन में योगदान करने के ठीक पहले के जो भक्त थे और ठीक पहले की जो परिस्थिति थी वो बहुत महान थी, बहुत विशिष्ट थी. Before, one god brother told me this story. एक गुरु भाई ने मुझे कहानी बताई थी. That before I joined, there was some time, this word started going around in the temple that Swamiji had said that we, the devotees, were all eternal associates of Lord Chaitanya. तो हम मेरे ज्वाइन करने के ठीक पहले एक ऐसी बात चल रही थी, अफवाह उड़ रही थी कि स्वामी जी ने कहा है कि सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं. All those devotees in the storefront, that we were eternal associates. उस दुकान में रहने वाले सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं. So one devotee, Subal, he went up to Srila Prabhupada's room. एक भक्त सुबह श्रील प्रभुपाद के कक्ष तक गए And he asked, Swamiji, और उन्होंने पूछा, is it true that we're eternal associates of Lord Chaitanya? स्वामी जी क्या बात सत्य है कि हम सब चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं? And Prabhupada said, yes. प्रभुपाद ने कहा हाँ. So Subal's sitting there, like feeling this glow. और सुबल से मानो ये तेज निकलने लगा हो. The Prabhupada had just said that this special group of devotees were all eternal associates of. प्रभुपाद ने कहा कि ये भक्तों का विशिष्ट समूह चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत पार्षदों में से है. Then Prabhupada said, everybody is. प्रभुपाद ने कहा सभी कोई, हर कोई. Srila Prabhupada ki जय. jai. Gaur Premanande. हरि हरि बोल. जय. Thank you. His Holiness Jayadeva Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. So we can well imagine our good fortune that Maharaj was with Srila Prabhupada in 1968, and when Srila Prabhupada just started the movement, and he had very precious association of Srila Prabhupada, very तो हम close. समझ सकते हैं कि 1968 में महाराज ने इस्कॉन में योगदान किया और इन्हें श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत संगति प्राप्त हुई. And because of his blessings, we are also getting that opportunity to hear about those wonderful pastimes and instructions. और उनकी कृपा से हमें भी इन अद्भुत निर्देशों के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है. So we request all the devotees to please सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं come on time in all the classes and never miss this nectar. सभी कक्षाओं के लिए समय से उपस्थित रहें और इस अमृत को न खो बैठें. So now we have with us His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj अब हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, to lead us in dancing kirtan. जो हमसे नचाएंगे, कीर्तन करेंगे. हरि बोल. So we express our gratitude to His Holiness Jayadeva Swami Maharaj and all the wonderful devotees by one time chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki. So we request His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj to please come. Meanwhile, I am announcing the schedule for tomorrow morning session. Tomorrow 8 a.m. we will have Srimad Bhagavatam class in auditorium by His Holiness Jayadeva Swami Maharaj. After breakfast at 9:15 a.m. His Holiness Bhakti Gaura Swami Maharaj is arriving. So we request devotees to please be present for his welcome. At 10:15 a.m. we will have Prabhupada Katha by His Grace Udayananda Prabhu. Followed by that, we will have Prabhupada Katha by His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj. And at 12:15 p.m. we will have Prabhupada Katha by His Grace Shruta Kirti Prabhu. And then at 1:15 p.m. we are expecting the arrival of GBC Chairman, His Holiness Bhanu Swami Maharaj. Vivo. So now I will request Maharaj to please take over the stage. Hare Krishna. Srila Prabhupada Memorial Festival ki. Yay. Can we have someone playing Mridanga Kartal, please? Kartal? Mridanga?
Good, good. Namao Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. कृपया आप सब बोलिए. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya. Gauranitai Jai, Gauranitai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. 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 Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jai Prabhupada. It's like that story we heard earlier today. बाद में पहले एक कहानी है, एक प्रभुपाद के शिष्य बोलते थे, एक प्रभुपाद कार्टेल के साथ, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन. And now your bhakta, ek do teen, 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 ek do teen. Dhire dhire, जोर से, Guru, Guru matlab heavy. Jaya Prabhupada, Prabhupada, dhire, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Om Vishnupad, Paramahamsa Parivraja Charja Astatar Sata Shri Srimad. His Divine Grace, Srila Bhai Charan Arvinda, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad, Paramahamsa Parivraja Charja Astatar Sata Shri Srimad. His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. Prem Sukoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasudhi Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath, Shamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Yuga Dharma Harinam Sankirtan Yagna Ki Jai. Brihad Mridanga Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai. Shri Shri Prahlad Nrsingadev Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai. Shri Shri Radha Madan Mohanji Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol.
All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru, Shri Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.